हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स। माई सेल्फ मोहित कुमार निगम। हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एग्जैक्टली एक साल पूरा हुआ है इस चैनल का जिसका नाम है ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स, जिसकी शुरुआत मैंने पिछले साल ही 26 जनवरी को की थी अपने ऑडियंस को मैथमेटिक्स पढ़ाने के इरादे से। तो चूंकि इसकी पहली वर्षगांठ है तो इस मौके पर मैंने सोचा कि एक संवाद सत्र रखा जाए जिसमें मैं कुछ बातें अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा और इस एक साल में इस चैनल की क्या प्रगति रही, क्या क्या काम हमने इस एक साल में किया, क्या क्या कवर किया कंटेंट वाइज, आई विल डिस्कस। और साथ ही मैंने कुछ अतिथि वक्ताओं को बुलाया है, कुछ ब्रिलियंट गेस्ट स्पीकर्स को मैंने बुलाया है, मेरे मित्र और मेरे परिवारजन हैं जो अपने विचार आपसे साझा करेंगे। तो लेट अस सी कि इस एक साल में हमने क्या क्या कवर किया है। जैसा कि पहले कहा गया था, पूरी पुस्तक कवर की है, सिलेबस क्लास 9th एनसीईआरटी बुक को कवर टू कवर, पेज बाय पेज कवर किया गया है। एवरी टॉपिक हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दीज क्लासेस। हालांकि अपलोड्स की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है, एक साल में शायद 60-70 वीडियोस ही अपलोड किए हैं। तो जो शुरू में बात की थी रियलिस्टिक रेट ऑफ ग्रास्पिंग, उसके मद्देनज़र मैंने अपलोड्स बहुत ज़्यादा नहीं रखे हैं और बीच बीच में पूरे सत्र में कुछ इंटेंशनल पॉजेस भी थे, कुछ गैप्स भी थे जब कोई क्लासेस अपलोड नहीं की गई और बीच बीच में मिड कोर्स करेक्शंस भी किए गए, जैसे कि क्लासेस की संख्या बढ़ा देना और उनकी समयावधि कम रख देना। विशेष रूप से जब एडवांस टॉपिक्स आए ज्योमेट्री के, जैसे यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बाद जब आपने ट्राइंगल, सर्किल्स, पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ा तो मैंने क्लासेस की संख्या बढ़ा दी और उनकी समयावधि कम कर दी। दिस वाज इंटेंशनल एंड अ मिड कोर्स करेक्शन। फिर अपेंडिक्स 1 को कवर किया गया, जैसा कि पाठ्यक्रम में उसका क्रम अंत में दिया है, उसके पहले ही इसे किया गया, क्योंकि अपेंडिक्स 1 इज अबाउट प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, जिनकी जो टेक्निक्स और कंसेप्ट्स आप मैथमेटिक्स में लगभग हर चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए समय रहते ससमय इसको हमने बीच में ही कर लिया था। वी डिड नॉट वेट टिल एंड। शायद यूक्लिड ज्योमेट्री वाले चैप्टर के आसपास अपेंडिक्स 1 को किया गया और ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होते गए। फिर मैंने जैसा कहा था इंटरलिंकिंग ऑफ चैप्टर्स ये किया गया है। आप देखेंगे हर क्लास में आगे या पीछे वाले चैप्टर्स को इन्वोक और अप्लाई किया गया है, इसका मैंने पूरा प्रयास किया है। मैंने कुछ कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि पैराफ्रेजिंग, अर्थात शब्दों से खेलकर और वाक्यों को कंपाउंड बनाकर जटिल क्वेश्चन बनाना, भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए किस प्रकार जटिल और टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये मैंने कई बार एग्जाम्पल्स में हाईलाइट किया है और बताया है कि किस प्रकार सुपीरियर क्वेश्चन बनाने का ये एक सोर्स कोड है, पैराफ्रेजिंग। फिर मैंने बीच बीच में क्लासेस के साथ छोटे छोटे वीडियोस, जिनको मैं मैथ क्लिप कहता हूँ, 2-3 मिनट के क्लिप्स मैंने इंटरमिटेंटली रिलीज किए, जिसमें मैनी की कंसेप्ट्स वर हाईलाइटेड लाइक इन्फिनिटी, अलजेब्रा वर्सेस ज्योमेट्री, जनरलाइजेशन, सिमेट्री एटसेट्रा, जिनको आप शॉर्ट्स की तरह कंज्यूम कर सकते हैं। फिर मैंने इस पूरे कंटेंट में, इस पूरे सिलेबस में न्यू एंड नोबल क्वेश्चंस जो मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं, हैंडमेड क्वेश्चंस फॉर यू मैंने बनाए हैं, जिन्हें आपको हमेशा मैंने एक्सरसाइजेस के रूप में दिखाया है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बिना किसी सहायता की हल कर पा रहे हैं तो इन दैट केस आपको IIT, कैट या IAS जैसी परीक्षाओं में जरूर बैठना चाहिए, जहाँ पे आपकी सफलता के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फिर इसके बाद आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस। ओल्ड NCERT की पुस्तक से मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपके काम के होंगे, तो उन सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए आई विल डू सम एक्स्ट्रा क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर दिस कोर्स। अब केवल एक चैप्टर बचा है शायद, अपेंडिक्स 2 मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसको किया जाएगा इस सत्र के बाद, इस संवाद सत्र के बाद। और फिर जल्दी ही क्लास 10th का सिलेबस इसी पैटर्न पे शुरू होगा, मे बी शायद मार्च के महीने में मैं इसको शुरू करने की इच्छा रखता हूँ। और आज मैंने इस सत्र में 4 गेस्ट स्पीकर बुलाए हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा और वे आपसे अपने विचार साझा करेंगे क्रमवार तरीके से। तो पहले गेस्ट स्पीकर के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर निशीथ यादव IRS को। ही इज़ अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड माई IRS इनकम टैक्स बैचमेट, and he is a mathematics lover.
He has done BTech from IIT Delhi and he has done MBA from Oxford University London. और ये मुझे हमेशा मोटिवेट करते आए हैं रिगार्डिंग दिस चैनल और इसके कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे कंसेप्चुलाइज किया जाए. हमें याद है कि कोविड के लॉकडाउन के दौरान हम लोग इस विषय पर चर्चा भी करते थे कि इस तरह का कोई चैनल शुरू करना चाहिए या किस तरह कंटेंट डेवलप किया जाए. और इवन हमारी IRS ट्रेनिंग के दौरान हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करते थे. तो मिस्टर निशीथ यादव हैज़ बीन हेल्पिंग मी एंड गाइडिंग मी. He regularly watches my videos and gives me feedback regarding how to improve the quality and content. So he will now speak to you regarding mathematics. Over to him now. थैंक यू मोहित जी, आपने मुझको आज अपने चैनल पर इनवाइट किया है. बचपन में मैथ से ज़्यादातर बच्चों को बहुत डर लगता है, इसलिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स को इजी बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है. आपका चैनल ये काम बखूबी आज 1 साल से कर रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. एंड डियर स्टूडेंट्स जो मोहित जी की क्लासेस को बहुत ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे. मैथ्स के बारे में मैं आपसे कुछ मिनट बात करना चाहूँगा. पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये है कि मैथ्स तो इतनी टफ है, तो मैं इसमें मेहनत क्यों करूँ. तो ये बात तो करेक्ट है कि मैथ्स टफ है, लेकिन टफ चीज़ें करना, मेहनत करना एक बहुत फ़ायदे का काम है. जैसे मान लीजिए हम लोग क्रिकेट देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बुमराह ने कितनी अच्छी यॉर्कर डाली या यशस्वी जायसवाल ने कितना अच्छा शॉट मारा. लेकिन अगर कभी आप इन क्रिकेटर्स की इंटरव्यू देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने 1000 बार नेट प्रैक्टिस में वो बॉल डाली होगी, मेहनत करी होगी, उसके बाद जाके फील्ड में वो यॉर्कर पड़ पाई है. तो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने की आदत फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी. इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मोहित जी खुद हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके इतना अच्छा, वाइब्रेंट और इन्फॉर्मेटिव चैनल आज क्रिएट किया है. देखिए, अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें जिसने अभी पढ़ना शुरू किया है, तो आप देखोगे कि उस बच्चे को लेटर्स को समझने में, उनको याद रखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है. बट धीरे धीरे जब वो पढ़ना सीख जाता है तो वो एक बार की मेहनत उसके लिए लाइफ भर काम देती है. सेम इज़ ट्रू विद मैथ्स. एक बार की मेहनत है, एक बार आप उन टॉपिक्स को समझ लो तो फिर वो टॉपिक्स आपको लाइफ भर मदद करेंगे. अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे और आगे पढ़ेंगे या आगे चल के फिर जॉब्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जिन टॉपिक्स को आपने 9th और 10th क्लासेस में पढ़ा था, वही कंसेप्ट्स बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आज आप मेहनत करके ध्यान से इन टॉपिक्स का अच्छा बेस बना लेते हैं तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी. बट मुझको लगता है कि मैथ्स पढ़ने की एक और बहुत इम्पोर्टेंट वजह है, वो ये है कि मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हमको सोचने के, दुनिया को देखने के, विजुलाइज करने के अलग अलग तरीके सिखाते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क सिखाते हैं. जैसे आप ज्योमेट्री में सर्कल्स देखते हो, ट्राइंगल्स देखते हो, तो एक बार जब हम उनको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पूरी लाइफ भर हम सर्कल्स रियल लाइफ में देख सकते हैं. जैसे आप मान लीजिए किसी क्रिकेट स्टेडियम को देखते हैं या वॉल पे लगी एक गोल क्लॉक को देखते हैं, तो उसको देखते ही हमारे मन में आएगा, चूँकि हमने ज्योमेट्री में सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, कि ओके ये एक गोल स्टेडियम है तो ज़रूर इसका एक कोई सेंटर होगा और उस सेंटर से उसके पेरीमीटर का हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा. तो ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है. तो मैथ्स पढ़ना हमको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रेशनली, लॉजिकली सोचने में हमेशा हेल्प करता है. देखिए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मैथ्स केवल कुछ फॉर्मूले याद करना और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर देना, ये मैथ्स नहीं होता है. मैथ्स का मेन रोल है फ्रेमवर्क से दुनिया को एनालाइज करना एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे मे बी खुद नए फ्रेमवर्क्स डेवलप करना.
बहुत ब्रॉडली अगर हम देखें तो मैथ्स को हम दो टाइप का बोल सकते हैं, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स। प्योर मैथ्स मतलब कि आप मैथ्स के किसी टॉपिक में केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप उस टॉपिक की डिटेल समझना चाह रहे हैं, सो दैट्स प्योर मैथ्स। जैसे अगर आप प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं, मान लीजिए कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, या एक गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो केवल प्राइम नंबर्स को स्टडी करना, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्योर मैथ्स। लेकिन अगर प्राइम नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, लेट्स से फैक्टराइजेशन वाली प्रॉपर्टी जो हमने अभी बात करी, उसको हम रियल वर्ल्ड के लिए स्टडी करें या नई प्रॉपर्टीज़ हम ढूंढें फॉर एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड, जैसे कि सिक्योर पेमेंट्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, फ्रॉड प्रिवेंशन एट्सेट्रा, तो दिस बिकम्स अप्लाइड मैथ्स। जब आप रियल वर्ल्ड के लिए मैथ्स की प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हो तो उसको हम अप्लाइड मैथ्स बेसिकली बोलते हैं। दोनों प्योर और अप्लाइड मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, आप दोनों में अपना करियर बना सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस है, वो मेनली मैथ्स का अप्लाइड पार्ट ही है। सिमिलरली फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, इसमें भी बहुत सारी अप्लाइड मैथ्स यूज़ होती है। तो कंक्लूजन में बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथ्स में बहुत वैरायटी है और मैथ्स में डिफरेंट टाइप का इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बहुत सारे डिफरेंट अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं फिर से मोहित जी को बधाई देता हूँ एंड ऑल द बेस्ट टू स्टूडेंट्स फॉर अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच। ओके, इसी क्रम में अगले गेस्ट स्पीकर जिन्हें मैं बुलाना चाहूंगा वो हैं मिस्टर सुमित सिंघल। ये मेरे क्लोज फ्रेंड हैं और मेरे आईआईटी कानपुर बीटेक के बैचमेट हैं। ही हैज़ डन एमबीए फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी यूएसए और प्रेजेंटली ही इज एमडी इन सिटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एट न्यूयॉर्क। ही इज ऑल्सो अ मैथमेटिक्स लवर, मैथमेटिक्स एंथुसियास्ट, और ये मुझे मोटिवेट करते आए हैं रिगार्डिंग दिस चैनल। लास्ट ईयर मैं इनसे काफ़ी डिस्कशन करता था, हाउ टू स्टार्ट द चैनल, हाउ टू डिज़ाइन द करिकुलम और फाइन एस्थेटिक्स लाइक थंबनेल। ही हैज़ बिन गाइडिंग मी। और इस चैनल में मैंने कंटेंट में कई सारे नए क्वेश्चंस रखे हैं, उन्हें मैं सुमित से डिस्कस करता आया हूं रिगार्डिंग हाउ टू फ्रेम दीज न्यू क्वेश्चंस। So now he will discuss with you and address you regarding his views on mathematics with an international perspective. Over to him now, Sumit Singal ji. Thanks a lot for inviting me to speak with our friends here today. Hello, friends. How are you all? I'm Sumit Singal, and I would before we begin, I would like to congratulate you to be part of this channel and wish you all a very happy Republic Day. I'm really glad to be talking to you on this particular day, as it has a significant importance for the country of India. So, where I grew up and is my homeland. So, and then I would really like to thank Mohit for creating such a wonderful content for mathematics and children learning in the Hindi language for mathematics, because it is a unique opportunity as well as a gap that you will find a lot of YouTube channels on mathematics across the world, but nothing comes close to what Mohit is striving to create. He has built this channel on Hindi language platform, which is very important to help the grassroots kids in India who do not have access to the fancy education of private schools, or if they do have, he has created a content that focuses on the basic skills of mathematics, starting from NCERT and building upon it. Believe me, friends, these skills are your utmost importance in your life. Mathematics, everyone is scared of mathematics, but it is the most fun and easy subject. The most important part is you have to learn it from the basics and with the right teacher.
And someone like Mohit, who has kind of topped UPSC in mathematics, he's an IIT graduate. He was one of the toppers of our batches in IIT Kanpur as far as mathematics is concerned, and which is why we two connected. I have a strong love of mathematics. I am in my life because of mathematics. And when I was preparing for IIT, you would, in any competition you prepare for, people will tell you, do this book, do that book, do this foreign author or that, but ultimately the basic concepts are the same. That is what Mohit is trying to teach you. NCERT books, very basic mathematical concepts of 9th and 10th grade, which are the building blocks not just of mathematics for your future, but for your life. He also then takes them to a next level to help you with the DIY problems, to help you apply these skills to your daily life so that you can relate to them, understand them better, and build a good foundation with these skills. So that, I think, is commendable job that Mohit is doing, and I am really proud to be associated with this channel. I remember Mohit and I talking with each other before he was starting this channel, and I've always encouraged him, and I'm glad he has completed 1 year. It takes a lot of time and effort out of his daily job to do this, and it is purely, somebody who can do it is purely for the love of mathematics. So now, why is mathematics important? It is important because as we grow in life, or from our early childhood, there are only 2 subjects that we learn that will build the foundation of our education. One is language. You could learn any language, Hindi, English, foreign language, or wherever you grow up, your mother tongue, that language, because it helps you read. Then as you progress, you go into the literature and understand deeply about the various texts written in those language. And then second is mathematics. It's again simple. You start from the very basics, counting, addition, subtraction, and then you build on, everything is built upon that. And geometry, again, very much in your daily life. So these are the 2 fundamental subjects in life. Everything else, be it science or social studies or anything, are built upon these 2 subjects. Now, mathematics is a useful tool to not just learn these formulas and equations and all, but also build a logical mind. A logical mind can see through complex issues and solve them. You may think, what is the use of mathematics beyond taking these tests? But that's not right. Mathematics will help you build a logical mind. If you think, even a politician, right, they are dealing with so many problems in life. They have to break them into simple things and say, okay, this is how I will deal with each one of them, and then everything will come together. That is essentially building a flow chart. Or when you do programming, it is the same flowchart technique that will help you. So mathematics is not just helping you deal with your day-to-day problems, but also in computer programming. Now, there are several other career options that will come through with mathematics. Be it obviously everyone will talk to you about engineering. That if you're good at maths, go into engineering. That is fine. But what are the other fields? I, for example, work in the field of finance. I work with large corporates, for Fortune 500 companies of the world. I help advise them on various capital raise, if they need money, or what should they do as a strategy. And when we do that, we have to kind of look at their financial statements, the financial health of the companies, and it is again what? Mathematics. And all that mathematics, I am not doing 11th or 12th mathematics or using calculus or anything in my day-to-day job. I am only using the 9th and 10th grade mathematics, which is very basic. But if you have your fundamentals clear, that will help you make decisions, complicated decisions. You will be able to see through those problems and boil it down to simple answers, which can be actionable. Now, if you look into the field of medicine, you would think there is no need for mathematics in medicine. No. As you grow, even in medicine, when there is
if you look at the DNA structure, there is pattern in that. There is, if the scientists making medicine for any drugs for curing cancer or what it be, they have to understand the pattern of the DNA and other things within the body, and then use that read that pattern and how to solve the problem of the disease. That is again mathematics. Now it is not a direct linkage, but as you learn these mathematical skills, you will build your logical mind, which will help you solve those problems. Now, when I was growing up, I always thought mathematics is nothing but manipulation of numbers. It's basically you once you master the basic skills, then you have to see how various things come together to solve different problems. You can sometimes mix algebra and geometry, or you can do arithmetic and algebra or geometry. These things all come together, complex numbers. I mean, as you go higher, you will do integral calculus, differential calculus, but even that is built on these foundational skills. Any competitive exams you take, as I said earlier, it is language and mathematics. They are testing you on two things: how deep your understanding is. So once you learn all these things, it will help you with any competition, be it CAT, be it UPSC, be it engineering, medicine, everything. And then what I believe is the core fundamental skill that you will learn if you master mathematics is these negotiation. Now people say, why do I need to learn tables? Why do I need to remember all the formulas and equations? It's as simple as when you are negotiating with someone, and there are many factors in that negotiation, it is your quick thinking, your ability to remember tables and formulas, that you can make that calculation quickly in your mind and give a decision to the other party, whereas the other person is still thinking about it and processing that. So the party which moves faster will be able to come to a conclusion and counter propose and win the argument. And that's a negotiation. In any deal you do in this world, whether it is with money or without money, it will be negotiation, and the person who has strong command over their mathematical knowledge will be able to help with that. So as I said, guys, mathematics is not just fundamental to your knowledge building, your personality building. From a career perspective, we talked about medicine, engineering, finance, whether you go into fashion designing or music. Music is another one. All the musical notes have a mathematical pattern. They run on Fibonacci series. So you cannot escape mathematics in your life. And this is the time, 9th and 10th, if you just sit down, spend time on your mathematical skills. And the way Mohit is teaching, he's not just teaching you the bookish knowledge. He's trying to help you apply those problems to the higher level learning, to push your understanding and how to combine various concepts in a problem. That is the way to learn. And I would really be happy to see that how you all will progress with this learning. So with that, I know we talked about a lot of things. I will come back again, and we can always do a interactive session, but I want to pass it back to Mohit for continuing this session. But thank you again for inviting me, Mohit, and I love to be here again. Thank you. अगले गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर दिव्यांशु निगम IAS, my beloved younger cousin, an engineer from BITS Pilani, and a maths and physics lover, as well as a voracious book reader. He is IAS officer of 2021 batch, that is Civil Service Exam 2020 with All India rank 44. और चूंकि ये आज हम सभी स्पीकर्स में यंगेस्ट हैं, तो ही इज मोस्ट अपडेटेड रिगार्डिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑन करियर्स. So he will share his views on mathematics. Over to him, Dhyanshu Nigam. Hello everyone, this is Dhyanshu Nigam. Let me first introduce myself. I am an IAS officer of the 2021 batch, and I have completed my graduation from BITS Pilani.
and most importantly, I am the younger cousin of the host of this channel, Mr. Mohit Kumar Nigam. Let me first and foremost congratulate Dada for his endeavor of opening this channel and completing 1 year, and his effort to spread the beauty of basic mathematics, of school level mathematics, to all. So kudos to that. Here, talking about mathematics, one of the subject that most of the people have very strong opinions about, be it for or against. Here we have likes of people on one hand, such as Dada himself, who just fall in love with mathematics, with this subject, who despite all their busy schedule, busy life, find some time that they can dedicate to this, to study it, to tell it to more people, to spread the beauty of it. For example, this YouTube channel itself. While on the other hand, we have people, I know a lot of them, who just, for lack of better word, hate this subject, and they somehow just are waiting and counting their days to just throw it off from their life. Well, let me tell you a secret. You can't throw mathematics out of your life, and you shouldn't. Because this is not just a subject, this is the way of life. This is how it is surrounding all of us in beautiful ways that you cannot even imagine. Let me here quote the famous Galileo Galilei, who has said that the entire nature and all the natural phenomena are written in just in one language, that is the language of mathematics. Or let me bring the famous quote from Albert Einstein also, who said that mathematics is nothing less than a poetry of logical reasons. So if you can see that we are surrounded by mathematics and its beautiful concept all around. For example, one example I can give of the Fibonacci series. That is one of the most famous series in the mathematics, and we can see it all around. Be it the petals of the flowers, for example the daisy flowers, they are arranged in a way that they follow the Fibonacci series. Or another concept of the golden ratio. You can Google it out, it's a beautiful concept, and you can see a lot of prevalence of it in the ancient Egyptian culture. Primarily the Great Pyramid of the Giza, where you can see it very well. Or in the Middle Ages, in the European side, you can see the most famous painting of all time, the famous Mona Lisa, follow this concept of golden ratio. Or if you come in the more recent phenomena or the recent concept, if you can see the major marvel of the architecture, for example the Burj Khalifa or the super mega structure, all are somehow related to the basic concept of geometry. And of course there are some complex things are there, but all in all they are related to mathematics. Or if you just are a fan of music and you understand music, you will be great to appreciate the importance of octaves in the music frequency. Dada himself is a very good guitar player, he must be knowing about this. Or you bring in the famous and the most prevalent world of internet and computers. All in all is based upon the concept of 0 and 1, that is binary numbers, which is nonetheless is mathematics. So it will not be an extrapolation or in extrapolation in a logical way to say that mathematics is a way of life. It's a way of thinking in a logical manner. Now let me talk and bring the discussion in a narrower way to the importance of mathematics in competitive exams in India specifically. This is more related and more specific to the students who are in schools and to the students or the college students who are in humanities specifically, and their parents also. So the importance of mathematics in straightforward exams like JEE and CAT is very explicit. They literally have a subject mathematics for the qualification. So it's not necessary to tell much more about it, because anyway you have to study mathematics. But I would like to talk some more on the concept of mathematics and use of mathematics in an implicit manner in the most coveted exam of the country, that UPSC civil service examination, where it may not be a very explicit mention of the use of mathematics, but it implicit manners, it has a great importance. Over the years we have seen that civil service examination is generally tend to be called as a humanities examination by our parents and all, but we have seen consistently through the official records also that students and candidates with the science background and mathematics background have consistently performed really well in this. And there are particular reasons for this, that in the preliminary examination they have a two examination basically. One is general studies paper and one is CSAT, that is civil services aptitude test, which basically test your basic mathematical concepts which are up to class 10th level as per the official notification.
So here, what do we test? We test basically mathematical reasoning, profit loss, percentage, ratio proportions, clocks, sequencing. All are basic thing, all are basic arithmetic, which we are taught till class 10. But somehow we have seen a lot of brilliant people who have otherwise done exceedingly well in their general studies paper have failed this CSAT examination. And just imagine the plight of these people who have lost their entire year just because of some lack of basic understanding of the mathematics. But here the picture is not all gloomy. I have seen in my own batch, which by the way almost includes 67%, 2/3 of my batch comes from the mathematics and science background. Though I've seen many of the students from the humanities background who have picked up and understood the conceptual clarity of basic mathematical concepts and have done exceedingly well in their CSAT examination. So it's not that if you are all hope is lost. Secondly, in the mains examination, that is the second level of the civil service examination, once you mathematical as an optional is a very popular optional. Even Dada himself had taken it during his time, and we have seen many toppers in recent years who have scored great marks in mathematics. So just like not just that, even in other options also like physics or engineering optionals, mathematics can be a real helpful. Now we talk about the next stages of life, and here Dada and I can tell from the personal experience also. Even if you get into services, be it the IAS or IRS or any other services, you will be dealing with mathematics in your everyday life. Be it budget preparation, be it working on the balance sheets. For example, Dada can share a lot of insight on this. Or be if you are posted as an MD of some government PSU or some companies or some specialized agencies, there you have to work on resource optimization. How do you do that? Big mega schemes are being launched. How do you do resource optimization? How do you allocate resources so that they are used for the best manner? All this required basic principles of mathematics. So even in the service also, you are somehow related to mathematics. So once again, in conclusion, let me bring home this concept again. Mathematics is all around us. It's not very practical and it's not advisable to hate it or to despise it or to run away from it. Rather, you should work for it. Rather, you should try to fall in love with it, and you will be astonished to see the amount of love it throws you back is 10 times the amount of love you give it to it. So in the end, I would like you all to really fall in love with mathematics and to learn from the basics. It's not that tough that people say it is. And thank you very much. Hope you will fall in love very soon. Okay, last but not least, अगले गेस्ट स्पीकर हैं my elder cousin Shri Rahul Nigam, again a mathematics enthusiast and my mentor and my friend, philosopher and guide during my academic days. I consider him as my guru. He is MBA from IIM-CALCUTTA and presently he is corporate strategist and mentor and a writer and a poet. He has a very good command over mathematics as well as English language, and as his hobby, he has been mentoring and guiding many CAT and IIT-JEE aspirants. So he will speak to you about mathematics and its importance in career and life in general. Over to him now, Shri Rahul Nigam. Thanks, Mohit, for giving me the opportunity to talk about a subject which I absolutely love. Talking of maths, I have often observed that a lot of students who don't like the subject or who don't enjoy the subject or are not good at it almost hate it, to the extent that they develop a phobia of numbers. And whenever I see a student having that kind of dislike for a subject like maths, it's a red flag for me and it worries me. Why does it worry me? It worries me because, we often do the mistake of associating maths with only science subjects. Yes, maths is the fundamental or the core of all science subject, but let me tell you that there's no escaping maths in life. Whatever field, whatever stream, whatever career choice you make in life, maths would always be an integral part of it. Look at all the competitive exams around you, not just IIT or engineering exams.
let's take MBA, be it CAT, be it banking PO exams or PSC or UPSC, maths is always an integral part of all these exams in one way or the other. You would have heard of terms like aptitude, mental ability, quantitative aptitude, data interpretation. What is all this? This is nothing but playing with numbers. This is indirectly maths. And why do all these exams or in all career choices, maths plays such an important role? Because let's face it, maths is not just a subject. It's a life skill. It's a life skill because we use it multiple times in our day-to-day life. In all our money transactions, in calculating returns on our investments, or while doing any financial calculations. And that's why it becomes an integral part of everything we do. What does maths as a subject teach us? Maths essentially is nothing but the art of problem solving. It teaches us a process to simplify complex problems, break them down into simpler problems, attack simpler problems individually, and then by solving simpler problems, arriving at a solution of complex problems. Now, you will say that what about things like pure arts, things like literature, things like designing things? How is maths important in that? Well, maths is important in those subjects also. Let's talk about architecture or creating a great painting. What do we love when we see a great painting? It's the balance, it's the symmetry. That's what we love. And what is it? It is nothing but the use of maths. So I think let's, face it that we have to learn maths, we have to be good at it, and we have to, use this subject for our own good rather than running away from it. So the next big question is, how do you become good at maths? Well, the only way to learn mathematics is to do it regularly. Regularly, consistently, every day, without fail. So indirectly, maths in a way also cultivates discipline in our lives. I remember when I was a child, my father always used to tell me, when nothing to do, do maths. Now I very well realize why he used to say that. Because when you do maths daily, you slowly start getting a hang of it. You will start solving problems. And when you start solving problems, you will start enjoying it. And maths will be fun rather than being some stressful subject which you have to cram all the way. So that's why, maths till 10th is absolutely necessary. Don't run away from it. Love the subject. Learn the subject well. And now, I really appreciate that our new education policy has, also given option to humanities students of 11th and 12th to combine it with maths. So now that option is also very much available to all. The second most important things to be good at maths is to do mental calculations. Do mental calculations as much as possible. Throw away the calculator, use mathematical formulas. Sometimes we see classes for Vedic mathematics and mental skills and all that. It is nothing but simply applied mathematics. Let me take an example. We talk about finding a square of a, two-digit number or a high two-digit number. Say, taking a square of a 67 square. What is it? It's nothing but utilizing the formula a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. All the quick calculation classes simply apply this and tell you the rules of the same. So 67 square is nothing but 60 plus 7 square. 60 square is something as simple as 3600. 7 square is 49. You add those two things, multiply 60 into 7, and
add it, make it twice and add it to the earlier sum that you've got, and you've got the final answer orally without using calculator. So that is the second most important thing to be good at maths. Students, all the best to you. Love maths, learn maths, master it, and it's a subject that would love you back always. And in the end, I will just quote the great scientist Albert Einstein, that maths is nothing but in its own way the poetry of logical ideas. ओके, अब गेस्ट स्पीकर्स को सुनने के बाद आई वुड लाइक टू से सम एंड नोट फॉर स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स. गेस्ट स्पीकर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं ताकि आप उनसे संपर्क कर सकें. तो पहली बात मैं जो स्टूडेंट से कहना चाहूँगा छात्रों से कि देखिए, डू नॉट स्किप और अवॉइड मैथमेटिक्स. यू मे अनलॉक मैनी करियर ऑप्शंस विद मैथमेटिक्स. और विशेष रूप से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आजकल, जिसमें आप कक्षा 10 के बाद कई सारे कॉम्बिनेशंस ले सकते थे जो पहले संभव नहीं थे. जैसे कि यदि आपको मैथमेटिक्स के साथ हिंदी साहित्य पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़नी है या सोशियोलॉजी पढ़नी है, तो वो सारे कॉम्बिनेशन अब पॉसिबल हैं. देयरफॉर अब मैथमेटिक्स को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप भविष्य में टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स जैसे फेसबुक, गूगल इत्यादि का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से IIT या IIM जाना चाहेंगे, जहां जाने के लिए मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स. सभी गवर्नमेंट जॉब्स टॉप टू बॉटम, विशेष रूप से UPSC जिसका सपना लगभग हर छात्र कभी न कभी जरूर देखता है, वहां भी मैथमेटिक्स सामने आती है, कंपलसरी है. और एक बात, एक सरप्राइजिंग फैक्ट है जो लेसर नोन फैक्ट है फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स, बायो वाले बच्चे जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं, मैं बताना चाहूंगा यू कैन नॉट रीच एम्स जो टॉप कॉलेज है विदाउट मैथमेटिक्स इन योर क्लास 11th और 12th. क्योंकि देखिए, एम्स का कंपटीशन बहुत स्टिफ है और जो बच्चे कक्षा 11-12 में मैथमेटिक्स कंटिन्यू करते हैं वो निश्चित रूप से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बेहतर स्कोर करेंगे. सो रिलेटिव इवैल्यूएशन में जब सीट्स कम है तो मैथ्स के बिना यहाँ एम्स और KGMC पहुंचना मुश्किल है. फिर यदि आप डिफेंस की परीक्षाएं देना चाहते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आप भविष्य बनाना चाहते हैं, वहां भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है. मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है, उसके जरिए MIT में आप डायरेक्टली एंट्री पा सकते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक दिस फैक्ट. यू कैन गेट डायरेक्ट एंट्री इनटू MIT फ्रॉम द चैनल ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. फिर बैंकिंग, SSC, रेलवे एंड एलाइड एग्जाम्स, दे रिक्वायर हाई स्पीड मैथमेटिक्स. और नाउअडेज जो बज़वर्ड है और AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की जॉब्स, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फॉर कोडिंग. आफ्टर ऑल, कोडिंग और प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक. So do share this video with your parents and teachers who can better guide you and supervise you when you are staying at home for self studies. और बच्चों के पेरेंट्स और टीचर से मैं दो बातें कहना चाहूँगा फर्दर. पेरेंट्स से कि देखिए, सेव योर चाइल्ड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बुक्स एंड गैजेट्स ओवरलोड. क्योंकि ज़्यादा किताबें या ज़्यादा गैजेट्स खरीदने भर से ज्ञान नहीं मिलता. ठीक वैसे ही जैसे कि जिम की मेंबरशिप लेने भर से बॉडी नहीं बनती. तो पहले अपनी टेक्स्ट बुक को मास्टर करें, उसके बाद ही एडवांस्ड और एक्सपेंसिव किताबें खरीदें. टीचर से मैं कहना चाहूंगा कि दे कैन ट्राई माई इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, जिसको मैं एक्सपेरिमेंटल DIY कहता हूं. आई कॉल इट लेबोरेटरी ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल डू इट योरसेल्फ क्लासेस, जो मैंने हर अध्याय के अंत में रखी हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था. इस मेथड के द्वारा आप पाएंगे कि आपके छात्रों में विषय की गहरी समझ डेवलप होगी और विषय के प्रति एक इंटरेस्ट जागेगा जब वो एप्लीकेशन को देन एंड देयर सीख पाएंगे. और ऑफ कोर्स कौन टीचर नहीं चाहेगा कि उसके छात्र उसके विषय में गहरी रुचि लें और अच्छा एक्सेल करें, बेहतर क्वेश्चन पूछें. फिर मैं मानता हूं कि एक बेहतर अध्यापन यदि मिले तो गांव के, छोटे शहरों के और कस्बों के मेधावी छात्रों को बहुत लाभ होगा. दे विल बी इमेंसली बेनिफिटेड. और मेरा मानना है कि अगर स्कूल में आप सिंसियरली पढ़ाई करें और आपको गुणवत्ता युक्त अध्यापन मिल पाए, जैसा कि मुझे मिला, तो एजुकेशन उतनी एक्सपेंसिव नहीं है और आगे जाकर ऐसी कोई जॉब क्राइसिस भी नहीं है, ना ही देश में ना विदेश में. क्योंकि अफोर्डेबल और ऑथेंटिक NCERT की किताबें जो कि बहुत ही उच्च कोटि की हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमारा बेस्ट सोर्स हैं. तो मैं कहना चाहूंगा NCERT जिंदाबाद. ओके, इस एंड नोट के साथ मैं संवाद सत्र को समाप्त करना चाहूंगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ ग्रेट करियर इन दिस न्यू ईयर 2025. आई विश यू वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू. Goodbye. See you in extra classes.